ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 32nd ਟੈਸਟ ਕੋਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ 1800 MCQs ਆਫ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। So let's begin with our first question, that is, a federal structure for India was first put forward by the कि जो इंडिया च जेड़ा federal structure है वो सब तो पहला कदों introduce होया। Option 1 is Act of 1909, Option 2 is Act of 1919, Option 3 Act of 1935, Option 4 Act of 1947. The correct answer here is the Act of 1935. Moving on to question number 2. Which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਦਾ ਰਿਹਾ? First option is British Constitution, second option is US Constitution, third option is Irish Constitution, and fourth option is the Government of India Act 1935. The correct answer is option 4, the Government of India Act 1935. Next we have is question number 3, which says, how does the Constitution of India describe India as? कि जो भारत दा संविधान है वो भारत नू किद्दां डिफाइन करदा है in the language of Constitution. First option is a federation of states and union territories, second is a union of states, third is Bharatvarsh, fourth is a federated nation. The correct answer here is option number 2, a union of states. Question number 4 says, the system of judicial review originated in, कि जो judicial review दा system है वो सब तो पहला कित्थे originate होया? First option is India, second Germany, third Russia, fourth USA. The correct option here is option number 3, Russia. Fifth question is, preventive detention means option 1, detention for interrogation, option 2, detention after interrogation, option 3, detention without interrogation, and option 4, detention for cognizable offence. Preventive detention ਦਾ मतलब ਕੀ है क्वेश्चन पूछना चाह रहा है. So the correct answer here is option number 1, that is detention for interrogation. Moving on to question number 6, it says, what was the basis for constituting the Constituent Assembly of India? कि ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ Constituent Assembly ਬਣੀ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣੀ? Option 1 is the resolution of the Indian National Congress, option 2 is the Cabinet Mission Plan 1946, option 3 is the Indian Independence Act 1947, option 4 is the resolutions of the Provincial or State Legislature of the Dominion of India. Correct answer here is option number 2, that is the Cabinet Mission Plan 1946. Next question says, from the constitution of which country the provision of federation was borrowed while framing the Constitution of India? कि ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ? Option 1 is USA, option 2 is UK, option 3 is Canada, option 4 is Switzerland. So the correct answer here is option number 3, Canada. Question number 8 is, who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? Means कि जो जुलाई 1946 से अपनी Constituent Assembly आई इन given options चों कौन उसका member नहीं सी? प्लीज़ क्वेश्चन नू एक बार दोबारा ते ध्यान ना पढ़ो. इस च पूछा गया कि कौन Constituent Assembly of July 1946 दा member नहीं सी? So the first option is Dr. Rajendra Prasad, second is K.M. Munshi, third is Mahatma Gandhi, fourth is Abdul Kalam Azad. The correct answer here is option number 3, Mahatma Gandhi.
Moving on to question number 9. Who was the chairman of the drafting committee of the constitution? Constitution बनाने ਲਈ ਜਿਹੜੀ drafting committee बनी ਸੀगी ਉਸ ਦਾ chairman कौन सी? Option 1 is JB Kripalani. Option 2 is Dr. Rajendra Prasad. Option 3 is Jawaharlal Nehru. Option 4 BR Ambedkar. Correct answer मैं आशा करदी हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ. Answer 4, option number 4 is the correct answer out here. Moving on to question number 10, which is a very interesting question. India is a republic because ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ. ਸੋ option 1 is because it is a democratic country. Option 2 is because it is a parliamentary democracy. Option 3 is because the head of the state is elected for a definite period. Option 4, all of the above. So the correct answer here is option number 3, that is the head of the state is elected for a definite. Moving on to question number 11. Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली बनी सी इंडिया दी ਉਹਦਾ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन सी उस टाइम ते? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड इज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर, थर्ड इज़ सर BN राव, फोर्थ इज़ सर KM मुंशी. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर 3, सर BN राव. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरैक्ट डेमोक्रेसी? जो डायरैक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सैप्ट सी वो दित्तियां हुई कंट्रीज़ चो किसने सब तो पहला इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शंस आर नंबर 1 इज़ रशिया, ऑप्शन 2 इज़ इंडिया, ऑप्शन 3 इज़ फ्रांस, ऑप्शन 4 इज़ स्विट्ज़रलैंड. करेक्ट आंसर हियर इज़ ऑप्शन नंबर 4, स्विट्ज़रलैंड. क्वेश्चन 13 सेज who was the president of the Republic of India who consistently described Indian secularism as सर्वधर्म संभव? कि जदों अपने रिपब्लिक ऑफ इंडिया च यह सैकुलरिज्म का कॉन्सैप्ट जदों आप इंट्रोड्यूस किया उस वेले कौन इंडिया का प्रेजिडेंट सी जिसने सैकुलरिज्म नू एज सर्वधर्म संभव डिफाइन किया? सो ऑप्शंस आर नंबर 1 is Dr. S. Radhakrishnan, number 2 is Dr. Zakir Hussain, number 3 is Dr. Rajendra Prasad, option 4 is Gyani Jail Singh. So the correct answer here is option 1, that is Dr. S. Radhakrishnan. Moving on to question 14, it says which of the following countries have an unwritten constitution? कि जो दित्तियां हुई कंट्रीज़ ने इन्हां विचों किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखित नहीं है? Option 1 is USA, option 2 is UK, option 3 is Pakistan, option 4 is India. Correct answer here is option 1, USA. Moving on to question number 15. The Constitution of India was first adopted on कि जो भारत का संविधान है उन्होंने आपां कदों अडॉप्ट किया? ये गल नोट करन वाली है कि भारत के संविधान को अडॉप्ट तो इनैक्ट करन दी 2 सैपरेट डेट्स ने, तो प्लीज़ इनू आंसर करते हुए कन्फ्यूज़ ना होना. सो जो ऑप्शन सानू दिते गए हैं एज है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 2 इज़ 26 जनवरी 1949, ऑप्शन 3 इज़ 26 नवंबर 1949, ऑप्शन 4 इज़ 31 December 1949. So the correct answer here is option number 3, 26 November 1949. Correct answer here is option number 3, 26 November 1949. इस डेट नू अपना जो अपना संविधान सी वो अडॉप्ट होया वो इनफोर्स 26 जनवरी 1950 होया. 26 नवंबर नू असी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया सी. Question number 16 says which of the following is a feature to both the Indian Federation and the American Federation? जो Indian Federation and American Federation दा इन्हां चारां विचों केड़ा फीचर है जो कॉमन है जो दोनों विच अवेलेबल है? So option 1 is single citizenship, option 2 is dual judiciary, option 3 is 3 lists in the constitution,
Option 4 is a federal Supreme Court to interpret the Constitution. So the correct answer here is option number 4, a federal Supreme Court to interpret the Constitution. Moving on to question number 17. The Constitution of India describes India as कि जो भारत दा संविधान है अगेन वो इंडिया नू किद्दां डिस्क्राइब करदा है a union of states, second option is quasi-federal, third is federation of states and union territories, fourth is a unitary state. It is a repeated question, so I hope कि तुहानू आंसर भुलिया नहीं होएगा. Answer still remains option number 1, that is a union of states. Coming over to question number 18. Who among the following was the President of Constituent Assembly of India? Constitution बनाने लई अपनी एक Constituent Assembly बनी सी ते उसदे प्रेजिडेंट उस समय कौन सी? ऑप्शन 1 इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 इज़ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 इज़ M.A. जिन्ना, ऑप्शन 4 इज़ लाल बहादुर शास्त्री. सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Coming to question number 19. The convention that once a speaker always a speaker is followed in कि जो ये कन्वेंशन है या कस्टम है कि जो एक बारी स्पीकर है वो हमेशा स्पीकर ही रहेगा, एक किस कंट्री च अपना ये रूल फॉलो करते हैं? ऑप्शंस आर UK, USA, फ्रांस और इंडिया. द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर 1, UK. Coming on to the last question of this series, that is question number 20. Indian Penal Code came into operation in कि जदों कि किस टाइम अपना इंडियन पीनल कोड जो है लागू होना शुरू होया? ऑप्शन 1 इज़ 1858, ऑप्शन 2 इज़ 1860, ऑप्शन 3 1859, ऑप्शन 4 1862. द करेक्ट आंसर हियर इज़ ऑप्शन नंबर 4, 1862.